ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ दशमोऽध्यायः। जनमेजय उवाच। कोऽसौ सत्यव्रतो नाम ब्राह्मणो द्विजसत्तमः। कस्मिन् देशे समुत्पन्नः कीदृशश्च वदस्व मे। कथं तेन श्रुतः शब्दः कथमुच्चारितः पुनः। सिद्धिश्च कीदृशी जाता तस्य विप्रस्य तत्क्षणात्। कथं तुष्टा भवानी सा सर्वज्ञा सर्वसंस्थिता। विस्तरेण वदस्वाद्य कदा मेदां मनोरमां। सूत उवाच इति पृष्टस्तदा राज्ञा व्यासः सत्यवती सुतः। उवाच परमोदारं वचनं रसवच्छुचिः। व्यास उवाच शृणुराजन् प्रवक्ष्यामि कदां पौराणिकीं शुभां। श्रुता मुनिसमाजेषु मया पूर्वं कुरुद्वः। एकदाहं कुरु श्रेष्ठ कुर्वं तीर्थाटनं शुचि। सम्प्राप्तो नैमिषारण्यं पावनं मुनिसेवितं। प्रणम्याहं मुनीन् सर्वान् स्थितस्तत्र वराश्रमे। विधिपुत्रास्तु यत्रासन् जीवन्मुक्ता महाव्रताः। कदा प्रसङ्ग एवासीत् तत्र विप्रसमागमे। जन्मदग्धिस्तु पत्पच्च मुनीनेवं समास्थितः। जमदग्निरुवाच सन्देहोऽस्ति महाभागा मम चेदसि तापसाका। समाजेषु मुनीनां वै निस्सन्देहो भवाम्यहम्। ब्रह्मा विष्णुस्तदा रुद्रो मघवा वरुणो नलः। कुबेरः पवनस्त्वष्टा सेनानी च गणाधिपः। सूर्योऽश्विनौ भगः पूषा निशानादो ग्रहास्तदा। आराधनीयतमः वाञ्छितार्थः फलप्रदः। सुगसेव्याश्च सततं चाशुतोष्वच्च मानदः। ब्रुवन्तु मुनयः शीघ्रं सर्वज्ञा संशिता व्रताः। एवं प्रश्ने कृते तत्र लोमशो वाक्यमब्रवीत्। जमदग्ने शृणु शैतद्यत्तस्पृष्टं वै त्वयाधुना। सेवनीयतमा शक्तिः सर्वेषां शुभमिच्छताम्। परा प्रकृतिराद्या च सर्वगा सर्वदा शिवा। देवानां जननी सैव ब्रह्मादीनां महात्मनाम्। आदिप्रकृतिमूलं सा संसारपादपस्य वै। स्मृता चोचारिता देवी ददाति किल वाञ्छितं। सर्वदैवाद्रचिता सा वरदानाय सेविता। इतिहासं प्रवक्ष्यामि शृण्वन्तु मुनयः शुभम्। अक्षरोच्चारणादेव यदा प्राप्तं द्विजेन वै। कोसलेषु द्विजः कश्चिद्देवदत्तेति विश्रुतः। अनपत्यश्चकारा श्रेष्ठिं पुत्राय विधिपूर्वकं। तमासदीरमास्थाय कृत्वा मण्डपमुत्तमं। द्विजानाहूय वेदज्ञान् सत्र कर्म विशारदान्। कृत्वा वेदीं विधानेन स्थापयित्वा विभावसून्। पुत्रेष्टिं विधिवत्तत्र चकारद्विजसत्तमः। ब्रह्माणं कल्पयामास सुहोत्रं मुनिसत्तमम्। अध्वर्युं याज्ञवल्क्यं च होतारं च बृहस्पतिं। प्रस्तोतारं तदा पैलमुद्गातारं च गोबिलं। सभ्यानन्यान् मुनीन् कृत्वा विधिवत् प्रददौ वसु। उद्गादा सामगश्रेष्ठः सप्तस्वरसमन्वितम्। रदन्तरमागायत्तु स्वैरीतेन समन्वितम्। तदास्य स्वरभङ्गोऽभूत् कृते श्वासे मुहुर्मुहुः। देवदत्तश्चुकोपाशु गोभिलं प्रत्युवाचः। मूर्खोऽसि मुनिमुख्याद्य स्वरभङ्गस्त्वया कृतः। काम्यकर्मणि सञ्जाते पुत्रार्थं यजतश्च मे। गोभिलस्तु तदोवाच देवदत्तं सुकोपितः। मूर्खस्ते भविता पुत्रः षडशब्दविवर्जितः। सर्वप्राणिशरीरे तु श्वासोचास सुदुर्ग्रहः। न मेऽत्र भूदूषणं किश्चित् स्वरभङ्गे महामते। तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य गोभिलस्य महात्मनः। शापाद्भीतो देवदत्त तमुवाचादिदुःखितः। कथं क्रुद्धोऽसि विप्रेन्द्र वृथा मयि निरागसि। अक्रोधना हि मुनयो भवन्ति सुगदा सदा। स्वल्पपराधे विप्रेन्द्र कथं सप्तस्त्वयाह्यहम्। अपुत्रोऽहं सुतप्तः
प्रोक्तापयुक्तपुनः मूर्खपुत्रादपुत्रत्वं वरं वेद विदो विदुः तदापि ब्राह्मणो मूर्खः सर्वेषां निन्द्य एव हि पशुवत् शूद्रवच्चैव न योग्य सर्वकर्मसु किं करोमीकमूर्खेण पुत्रेण द्विजसत्तम यदा सुशूद्रस्तदा मूर्खो ब्राह्मणो नात्र संशयः न पूजार्हो न दानार्हो निन्द्यश्च सर्वकर्मसु देशे वैव समानश्च ब्राह्मणो वेदवर्धिजधिः करदः शूद्रवच्चैव मन्दव्यः स च भूभुजा नासने पितृकार्येषु देवकार्येषु सद्विजः मूर्खसमुपवेश्यश्च कार्यश्च फलमिच्छदाम् राज्ञासु शूद्रसमो ज्ञेयो न युज्य सर्वकर्मसु का कर्षगस्तु द्विजकार्यो ब्राह्मणो वेदवर्जितः विना विप्रेण कर्तव्यं श्राद्धं कुशक्षडेन वै न तु विप्रेण मूर्खेण श्राद्धं कार्यं कदाचन आहारादधिकं चान्नं न दातव्यमपण्डिते दादा नरकमाप्नोति गृहीतो तु विशेषतः दिग्राज्यं तस्य राज्ञो वै यस्य देशे बुधा जनाः पूज्यन्ते ब्राह्मणा मूर्खा दानमानादिकैरपि आसने पूजने दाने यत्र भेदो न चान्वपि मूर्खपण्डितयोर्भेदो ज्ञातव्यो विबुधेन वै मूर्ख यत्र सुगर्विष्टा दानमानपरिग्रहैः तस्मिन् देशे न वत्स्तव्यं पण्डितेन कथञ्चन असतामुपकाराय दुर्जनानां विभूतयः विपिच्छुमन्दफलाढ्योऽपि काकैरेवोपभुज्यते भुक्तान्वं वेदविद्विप्रो वेदाभ्यासं करोति वै क्रीडन्ति पूर्वजास्तस्य स्वर्गे प्रमुदिता किल गोबिलादकिमुक्तं वै त्वया वेदविदुत्तम संसारे मूर्खपुत्रत्वं मरणादधिगर्हितं कृपां कुरु महाभाग शापस्यानुग्रहं प्रति दीनोदारणशक्तोऽसि पदामि तव पादयोः लोमेश उवाच इत्युक्त्वा देवदत्तस्तु पतितस्तस्य पादयोः स्तुवन् दीनकृदध्यर्थं कृपणः शाश्रूलोचनः गोबिलस्तु तदा तत्र दृष्ट्वा तं दीनचेतसं क्षणकोपामकान्दो वै पापिष्टा कल्पकोपनाः जलं स्वभावद शीतं पावगादपयोगदः उष्णं भवति शीघ्रं तद्विना शिशिरं भवेत् दयावान् गोपिलस्त्वाः देवदत्तं सुदुःखितं मूर्खो भूत्वा सुदस्ते वै वद्विद्वानभिभविष्यति इति दत्तवरः सोद मुदिद्धोद्भूद्विजर्षभः इष्टिं समाप्य विप्रान् वै विससर्ज यथाविधि कालेन कियदा तस्य भार्यारूपवती सती गर्भं ददार काले सा रोहिणी समा गर्भाधानादिकं कर्मं चकार विधिवद्विजः पुंसवनविधानं च शृङ्गारकरणं तदा सीमन्दो नयनं चैव कृतं वेदविधानदः ददौ दानानि मुदितो मत्वेष्टिं सफला तदा शुभेह्नि शुशुभे पुत्रं रोहिणी युधे दिने लग्ने शुभेत्यर्थं जातकर्म चकारसः पुत्रदर्शनगं कृत्वा नामकर्म चकार च उत्तत्य इति पुत्रस्य कृतं नाम पुराविदा स चाष्टमे तदा वर्षे शुभे वै शुभवासरे तस्योपनयनं कर्म चकार विधिवत्पिता वेदमध्यापयामास गुरुस्त्वं वै व्रते स्थितं नोच्चचारत्तदो तद्यः संस्थितो मुद्दवत्तदा बहुधा पाडितः पित्रा न ददारमदिं षटः मूढवत्तिष्ठेत्यर्थं तं शुशोच पिता तदा एवं कुर्वन् सदाभ्यासं जातो द्वादशवार्षिकः न वेदविधिवत् कर्तुं सन्ध्यावन्दनगं विधिं मूर्खो भूदिति लोकेषु गदावार्तादिविस्तरा ब्राह्मणेषु च सर्वेषु तापसेष्वितरेषु च जगासलोगस्तं विप्रं यत्र तत्र गदं मुने पिता मादानि निनादाद मूर्खं तमधिभर्त्सयन् निन्दितो दज्जनैकामं पितृभ्यामदबान्धवैः वैराग्यमगमद्विप्रो जगामं वरमप्यसौ
अन्धो वरस्तदा पुङ्ग नर्मूर्खस्तु वरस्मृतः इत्युक्तोऽसौ पितृभ्यां वैविवेशकाननं प्रति गङ्गातीरे शुभे स्थाने कृत्वोडज्जनमुत्तमं मन्यां वृत्तिं च सङ्कल्प्य स्थितस्तत्र समाहितः नियमं च परं कृत्वा नासत्यं पब्रवीम्यहं स्थितस्तत्राश्रमे ब्रह्मे ब्रह्मचर्यव्रतो हि सः इति श्रीदेवी भागवते तृतीयस्कन्धे दशमोऽध्यायः। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्द।